Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. Today I'm going to make chicken nuggets and let's get into the video and I'll share the whole recipe. So चिकन हम लोगों का रेडी हो चुका है. मैंने इसको स्मॉल क्यूब्स में कर लिया. नाउ आई एम कटिंग ग्रीन चिली. अगर आपको ज़्यादा पसंद है यू कैन ऐड मोर, बट मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही काट लिया. उसमें से अगर आप बीच निकाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्पाइसी कम होगी. इसको भी छोटा छोटा और साथ मैंने लिया थोड़ा सा कोरिएंडर. नाउ लेट्स लुक एट द इंग्रेडिएंट्स. ओके, सो वी हैव रेड चिली फ्लेक्स, ज़ीरा पाउडर, लहसुन पाउडर एंड ब्लैक पेपर सिंपली. फिर है प्याज, बॉइल्ड पोटैटोज़, सम कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज़, चिकन एंड शिमला मिर्च, ग्रीन कैप्सिकम. ये सब आपने छोटा छोटा काट लेना है. एंड इसके अलावा हम लोग ऑरिगेनो एंड चिकन पाउडर थोड़ा सा यूज़ करेंगे. एंड दीज आर ऑप्शनल. नाउ लेट्स मिक्स दीज इंग्रेडिएंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव चिकन. इसमें से मैं थोड़ा सा पानी रह गया था वो निकाल रही हूँ चिकन का. चिकन के बाद हम लोग डालेंगे इसके अंदर अपने बॉइल्ड पोटैटोज़. आई थॉट के सारे यूज़ नहीं होंगे इसलिए मैंने थोड़े से बचा लिए थे, बट मैंने एंड पे वो भी सारे डाल दिए. नेक्स्ट वी विल ऐड अनियन, चॉप्ड अनियंस. फिर है हमारे पास शिमला मिर्च चॉप हुई, कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज़. इनकी क्वांटिटीज़ मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी. एंड जस्ट मिक्सिंग इट अप. Now add over spices. Okay, so first of all black pepper, then red chili flakes, cumin powder, जीरा powder and garlic powder. Garlic powder की जगह आप garlic chop powder डाल सकते हैं. And this is chicken powder, that's optional, and some oregano. Now mixing it up, and I think I forgot to add salt, जो कि फिर मुझे बाद में याद आया था, and maybe I didn't record it. So you can add salt according to your taste. Yes, there is it. And you have to add those 2 slices of bread too, so that extra water can be absorbed by this mixture. Now we will just blend it in a chopper and look at this smooth mixture. But it's not a consistency कि हम लोग inconsistencies की ऐसी नहीं है कि हम लोग इसका खुद बना सकें, इसलिए we will pipe it. This is a new method of making chicken nuggets. So I didn't have a piping bag, so I used this bag and it worked fine. Now let's make donuts or any other shape you like. Now I am wrapping it up with working foil. किसी भी प्लास्टिक शीट से आप इसको रैप कर दें. And then we have to freeze it. Freeze it for 2 hours minimum, and maximum you can freeze it for a day. And then take it out. Look at them right now. They are very sturdy. And now we are making its coating. We have taken an egg and add salt and pepper according to your taste in it, and just mix it up for the coating. We will first dip in this egg mixture and then we will coat them with breadcrumbs. These are homemade breadcrumbs, fresh, so you can use market guide or whatever you have. Now we will dip it
एक टिप है कि आपने इन लोगों को बनाने के बाद ना, इसके बाद इसको ज़्यादा देर के लिए बाहर नहीं छोड़ना है, फ़ौरन कोट करना है और फ़ौरन फ्राई करना है, बिकॉज़ ये जो डोनट्स है ये फ्रीज़ हुए हुए हैं, तो ये वरना ढीले पड़ जाएंगे, बिकॉज़ इसके अंदर आलू भी है, तो इस वजह से। So just coat them quickly and fry them. और अगर ढीले हो भी जाएं गलती से, so just freeze them again for half an hour maybe, so they'll be good to fry. Okay, now let's fry. दो तरीके से आप लोग फ्राई कर सकते हैं, either do them like this in a pan that are shallow frying and or in a wok deep fried. So दोनों तरीके से अच्छा है, लेकिन जो डीप फ्राइड होंगे वो ज़्यादा क्रिस्पी होंगे बिकॉज दे विल गेट मोर ऑयल. So fry them for 5 to 6 minutes max, 3 minutes both sides until they are golden brown. Okay, so they are ready, and now let's deep fry our other donuts. Fry them on medium heat, not high, because there is raw chicken in them that needs to be cooked.